Hi everyone, welcome to S4 Sharanya Science classes. In this session, we are going to discuss about the muscular tissue of class 11. You know that muscular tissue are the tissue which is helping us for the locomotion and movement. Here you can see that the muscle fiber, these are the muscle fiber total together, right? Or in this you can see a small bundles of myofibrils will be there, which is actually the muscle cells. Right. So this muscle tissue is actually made up of many muscle fibers which are the muscle cells, or we can say that they are the myofibrils. They are made up of small, numerous, fine, thread-like structures called the myofibril. So this entire structure, we can say that they are the muscle fiber, right? And it is actually made up of myofibril, which has a thread-like structure. Numerous fine muscle fibers will be there inside that. So which is called the myofibrils, right? So here you can see that the entire muscle fiber, this one, in that a small bundles of, right, myofibrils will be there, right? So this muscle tissue mainly made up of muscle fibers, that's actually the muscle cells, and in that muscle cells you can see that small fine thread-like structures called the myofibril, right? And these muscle fibers actually they have the capacity for contraction, continuous contraction and relaxation, right? So this is actually because of the help of a special type of protein present in them, which is called the contractile protein, right? So that's why because of the continuous contraction and relaxation, they can help us for that movement and locomotion. According to that type, we can divide that entire muscle fibers or the muscular tissue into three types. They are actually the skeletal muscles, or we can say that they are striated, and they are voluntary muscles. The other one, the smooth muscles, non-striated or visceral muscles or involuntary muscles, we can say that. And the third type of muscle is actually the cardiac muscles. One by one, we will go in detail. So here comes the first type of muscular tissue, that's actually the skeletal muscle or the striated muscle or the voluntary muscles. Here you can see that what is their specialty. These are actually mostly abundant tissue, right, in vertebrate. In a vertebrate, the most abundant type of tissue is that actually the skeletal muscle tissue, right? And this is actually meant for that movement of bones and the skeletal system, right? And that's why it is termed as voluntary muscles. Here you can see that here you are seeing that biceps, right? And the triceps, whatever it is, these muscles are actually the skeletal muscles. Why it is called skeletal? क्योंकि ये attach होती है skeletal system के साथ साथ, right? So these are attached to the bones, so that's why it is called skeletal muscles, right? So example है हमारे biceps and triceps. You can see that these are the muscles which is attached to the skeletal system directly. इसलिए तो उसका नाम दिया है skeletal muscles. Abhi, you can see that in this muscles, if you are taking the section of that muscle, you can see that alternate striations will be there. That means alternate bands are present in them. इसलिए उसको बोलती है striations, right? और that's why this type of muscles are called striated muscles. ये striations क्यों होती है? इसमें actin and myosin दो proteins की arrangement होती है, उसकी filaments, actin filaments and myosin filaments, वो special type of filaments की arrange की वजह से these are actually these striations हमको दिख सकती है. So that's why this is called a striated muscle, right? So and these are actually bundle एक साथ parallel fashion में इसको arrange किया है and this will be formed as bundle. You can see here ये पूरा muscular tissue है, इसमें you can see that myofibrils की thin lining होती है, what is it, parallel fashion में they are arranged and they will form that entire tissue. So एक stack of myofibrils you can see here, right? So this is that entirely, this is the muscular tissue, striated muscular tissue. उसमें बहुत सारी bundles of you can see that the myofibrils will be there, and this is actually covered by a tough sheath of connective tissue, and inside that you can see that all muscle fibers को tightly pack किया है. Another thing you have to remember here, these type of muscles are actually you can see wherever the voluntary actions are possible. That means जो action हमारा will के हिसाब से कर सकते हैं, there you can see that these type of muscle. इसलिए इसको हम voluntary muscles भी बताते हैं,
right? So here if you are taking that this muscle fiber structure, they are actually very long hai or cylindrical hai, and they are having multinucleated, right? So they are having multinucleases, right? Nucleases are present, and you can see that there will be multinuclei, right? And you can see that this is actually mitochondria bhi, you can see that there will be more than one in number. There will be more mitochondria क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा energy needed है, ये movement और locomotion के लिए help करती है, so it need more energy. So that's why multiple number of mitochondria to meet the energy needs. That also you can see in this type of muscles. Alright. And the coordinated movement of हमारे limbs, jaws, eyeballs, etc. It's actually the function of these type of skeletal muscles, right? इसके अलावा ये हमारी breathing process में भी help करती है because it's attached to that skeletal system or ribs and all. So that's why इसका coordinated movement है, हमको ये सारे process करने के लिए help करती है. Now we are going to discuss about the smooth muscles or the non-striated muscles or visceral muscles or involuntary muscles, right? From the name itself you will have a clear idea about that. Non-striated, right? That means इसमें जो striations नहीं है, और इसका shape भी देख लो यार. You can see that it is in spindle shape, broader at the center and narrower at the tip, right? तो ये एक spindle shape की है, right? And there is no striation. That means there is no dark and light band present here. इसलिए उसको नॉन स्ट्राइटेड बता सकते हैं, और इट इज एक्चुअली स्ट्राइएशंस के बिना ये स्मूथ अपीयरेंस दिखाती है, इसलिए स्मूथ मसल्स भी बोल सकती है. और ये मोस्टली अटैच्ड टू दैट, इट्स नॉट अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम, इसलिए उसको एक्चुअली वी कैन नॉट से दैट इट्स अ स्केलेटल मसल्स. एंड अनदर थिंग इज दैट ये हमारा इनवॉलंटरी एक्शन, वेयरएवर इनवॉलंटरी एक्शंस आर देयर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मसल्स. दैट मीन्स जिसका एक्शन हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए वी कैन से दैट दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स. और मोस्टली वो इनवॉलंटरी एक्शन होती है हमारा विसरल ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन्स में होती है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड विसरल मसल्स, राइट? तो हमने बता दिया था दे आर एक्चुअली इनवॉलंटरी है और फ्यूसिफॉर्म है. फ्यूसिफॉर्म मीन्स एक्चुअली द फाइबर्स, दिस इज अ फ्यूसिफॉर्म शेप, राइट? फाइबर्स आर नैरोवर एट द टिप एंड broader at the center. That means spindle shape, right? और हमने बता दिया already there is no striations, right? And you can see this cell junctions बीच में जो junctions होती है, they are actually helping them to hold together, and these are actually forming a bundle, right? By that covering of a connective tissue, right? So cell junctions hold them together and they are bundled together in connective tissue sheath. So again here also there is a connective tissue which is actually making them as a bundle, right? So you can see this type of muscles, right? Mostly in the wall of the internal organ, that means the visceral organ, जैसे कि blood vessels होगा, stomach होगा, intestine होगा, wherever the involuntary actions are there, even in esophagus and all, involuntary actions होती है which is not in our control. So that's why you can see 6 type of muscles in that all these visceral organs. इसलिए हम इसको involuntary muscles भी बोलती है, right? नॉन स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइएटेड मसल भी बोल सकती है. शेप मैंने पहले से बोल दिया था, फ्यूसिफॉर्म शेप है, दैट इज एक्चुअली स्पिंडल शेप है. एंड अनदर स्पेशलिटी इज देयर, हियर यू कैन सी दैट दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, यू कैन सी दैट. बट अबाउट दैट स्ट्राइएटेड मसल इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर. इसके अलावा मैंने पहले से बोल दिया था हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में द मूवमेंट, राइट, द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, दिस इज आल्सो एक्चुअली हैपनिंग बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस बोलती है हम उसको, जो फूड की मूवमेंट है, दैट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट? और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है वो भी इसकी वजह से होती है. सो दीस ऑल आर द फंक्शन. Now the third type of muscular tissue, that's actually the cardiac muscles. You can see that this is that structure of the heart, the entire heart muscle, right? This is actually the cardiac muscle. ये heart बना हुआ है cardiac muscle से. Again you can see that we can simply बता सकते हैं these are the heart muscles, right? And here this is also, it's not that continuous contraction relaxation हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी एक involuntary action में है. So these are the involuntary muscles seen in only in हार्ट, राइट? सिर्फ हार्ट में, इसलिए तो उसका नाम है कार्डियक मसल्स, राइट? और इसका यूनिक, दिस इज एक्चुअली यूनिक इन स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर हम सिर्फ हार्ट में देख सकते हैं. एंड दीज मसल्स आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द लाइफ, राइट? और हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट
जो कुछ सेल जंक्शंस होती है दैट्स एक्चुअली फ्यूज्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, राइट। तो ये सारे को ये सेल इसके बीच में जो सेल जंक्शंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देती है, उसकी वजह से वो आपस में व्हाट इज इट दे आर एक्चुअली स्टिक टुगेदर, राइट। एंड दीज टाइप ऑफ यू कैन सी दैट जब भी इसका कम्युनिकेशन जंक्शंस होती है you can see that there is a special type of disc which is called intercalated disc. You can see that ये एक cardiac cell है, and the same way you can see that this is also another cardiac tissue or cell. बीच में you can see that this is actually the intercalated disc, right? This is actually allowing the cell to cell contact, right? So here इसका contact होती है, right, as a unit. This as a unit. ये multicellular है. You can see that these will together function as a unit because of this presence of intercalated discs, right? So when one cell actually receives the signal, right, of that contact, it's not contact, it's actually contact, its neighbor cell are also contracted, right? So here you can see that contraction or relaxation hai. So that's because of this continuous channel, right, by this intercalated disc. क्या है इधर बता रही है, you can see that this is the structure of the cardiac muscle. You can see here these are the cardiac muscles, right? And if you are taking the structure, you can see that ये भी जैसे कि striated muscles है, same striations you can see that dark and light band है, but what is the specialty here? It is uninucleated. That means एक part में सिर्फ एक nucleus है, एक part में एक nucleus है, and these single nucleated structure को हम intercalated disc के हिसाब से दूसरी पार्ट में कनेक्ट किया है, राइट। सो दैट्स अ स्पेशलिटी। आप बोलेगी ये मल्टीन्यूक्लिएट नहीं है, एक ब्रांच में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, राइट। सो एंड दीज आर हैविंग स्ट्राइएशंस, राइट। वी कैन इवन से दैट इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ ये दोनों, दैट व्हाट विल से दैट स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड की एक मिक्सचर है, ऐसे भी बता सकती है, क्योंकि हियर यू कैन सी दैट स्ट्राइएशंस है बट इट इज इनवॉल्युंटरी नेचर, राइट, और मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो जैसे कि स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड की एक मिक्सचर फॉर्म है ये, राइट। एंड हियर यू कैन से दैट ये सेल जंक्शंस, राइट, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज सेल्स। इसके बीच में जो सेल जंक्शंस है, राइट, वो सेल जंक्शंस को हम बताती है हियर इंटरकलेटेड डिस्क। उसकी वजह से ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देती है, सो इट विल ऑल टुगेदर वर्क एज ए यूनिट। क्यों इसको एक यूनिट जैसे वर्क करना है? बिकॉज वी नो दैट हार्ट में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, राइट। तो वो कंट्रैक्शन एक पॉइंट से, राइट, ऐसे नोड्स इज साइनोएट्रियल दैट व्हाट से दैट नोड, ऐसे नोड एंड एबी नोड इज सो वो नोड से एक्चुअली दैट कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, स्टिमुलेट स्टार्ट होती है। इट हैज टू बी स्प्रेड थ्रूआउट दैट मसल, देन ओनली कंटिन्यूअस, दैट मींस रिथमिकली उसका कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पॉसिबल है। तो इट हैज टू बी स्प्रेड वेरी फास्ट, राइट। तो इसलिए हम बताती है एक सेल को कंट्रैक्शन मिल जाती है, सिग्नल ऑफ कंट्रैक्शन मिल जाती है, वो नाइबरी सेल में भी इजिली पास करती है थ्रू दिस इंटरकलेक्टेड डिस्क, राइट। सो दिस इंटरकलेक्टेड डिस्क एक्चुअली allowing that cell to cell contraction, right? So I hope this is clear for you, right? So either I told that already it has a few similarity with the skeletal muscle, क्योंकि इधर you can see that और that striations है, और few similarity है smooth muscle की जैसा, और इसको यूनिन्यूक्लिएटेड है, राइट, एंड ये इनवॉल्युंटरी एक्शन है। तो वी कैन से दैट बोथ सिमिलरिटी है जो व्हाट इज से स्केलेटल मसल से और स्मूथ मसल से है, और दैट इज एक्चुअली स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड नॉन स्ट्राइएटेड मसल से भी है, राइट। और यू कैन सी दैट देयर विल बी अ प्रोमिनेंट यूनिन्यूक्लिएशन, ना एक न्यूक्लियस है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, राइट। इफ यू आर गोइंग फॉर दैट द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, हम ऐसे बता सकती है स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस है, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस नहीं है। कार्डियक मसल्स में, राइट, स्ट्राइएशंस है बट वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है जैसे कि स्केलेटल मसल जैसा, राइट। और स्केलेटल मसल वॉलंटरी इन एक्शन है, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी है, कार्डियक मसल्स आल्सो इनवॉलंटरी इन एक्शन है, राइट। और उसका स्ट्रक्चर देख लो, स्केलेटल मसल्स और द स्ट्राइएटेड मसल्स दे आर एक्चुअली रियली लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल शेप की है। स्मूथ मसल्स हमने बता दिया था, दे आर फ्यूसिफॉर्म शेप, दैट इज एक्चुअली द स्पिंडल शेप। और कार्डियक मसल देख लो, दे आर सिलिंड्रिकल है बट इट इज ब्रांच्ड, बाकी सारे व्हाट इज अनब्रांच्ड है बट दिस इज ब्रांच्ड, राइट। एंड न्यूक्लियस की केस देख लो, स्केलेटल मसल्स में, स्ट्राइएटेड मसल्स में इट इज एक्चुअली मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है एंड कार्डियक मसल्स आल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड है, राइट। सो हमने बहुत सारी डिफरेंस भी बता दिया है, राइट। एंड
हमने बता दिया था ये व्हाट से दैट कंट्रैक्शन रिथमिक राइट, तो ये कंट्रैक्शन लाइफ थ्रू आउट द लाइफ होती है. यू कैन सी दैट मीन्स फ्रॉम दैट बिफोर बर्थ वी कैन से दैट मीन्स व्हेन द बेबी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रियो, दैट टाइम फीटस की स्टेज में हार्ट की स्टार्ट दैट हार्ट बीट शुरू होती है एंड इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, दैट मीन्स टिल डेथ. So these all are the different types of muscular tissue. Now we are going to discuss about the neural tissue or the nervous tissue, right? So mainly this neural tissue, right? So we can say that it is actually consist of different types of neurons, right? So the main component of that neural tissue or the nervous system, it's actually the neurons, right? So they are the basic and structural unit of nervous system, that we can say that they are the neurons. So we can simply say that they are the unit of the neural system. And because of this neurons, it is actually control and coordination of the body is actually happening, right? So we can say that the cells of the nervous system, right, they are actually highly specialized, हम बता सकते हैं वो highly specialized है स्टिमुले के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने में, राइट. सो इसलिए और इसके बाद वो कौन सी स्टिमुले एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुले के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगी एंड दैट स्टिमुलस को वो अपना ट्रांसमिट करेगा बहुत फास्टली. दे विल ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमारी बॉडी की पूरा बॉडी में जिधर की उसका रिस्पॉन्स चाहिए दैट स्टिमुलस को अलग अलग जगह में इट विल ट्रांसमिट, राइट. सो द ट्रांसमिशन ऑफ दैट स्टिमुले इनटू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट्स आल्सो डन बाय दिस न्यूरॉन, राइट. वो इधर आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट यू मीन बाय स्टिमुले. कोई सा भी व्हाट विल से दैट प्रोवोकेशंस और दैट which will give a response in our body, right. कोई भी specific functional reaction हमारी body से दे सकते वो, that all things are called as stimuli, right. और इसके हिसाब से हमारे body what the reaction it will give, action की तरफ कौन सी reaction वो दे देगा उसको हम बता सकते हैं, that is actually the response, right. So इसलिए हम बता सकते हैं ये responsible, this is actually responsible for all type of control and coordination in our body, right. So here you can see that this is the structure of the neuron. हम बताते हैं एक structure nerve cell और neuron बताती है, right. And ये neuron totally you can see that there will be a cell body, हमारी cytone बोलती है उसको cell body में. You can see that it is actually contained a nucleus, prominent nucleus है और cytoplasm है, right. So this is the cell body or the cytone in which the cytoplasm is there and the nucleus is there, right. And you can see that there will be what to say, it has a prominent nucleus, right. So ये cytoplasm में कुछ special granule like substance होती है, उसका नाम है Nissl granules, Nissl's granules, and some type of fibrils are actually present which is called the neurofibrils, right. And there will be some what to say thread like structure or finger like projection which will be arising from this cell body or cytone, जिसको हम बताती है dendrites, right. So the small finger like or thread like projections which is coming from that cytone, it is called that dendrite, right. ये dendrite की main function क्या है, it is actually receiving the impulse, right, from outside and it's actually passed to that cytone, right. बाहर से वो impulse को stimulus को receive करेगा, impulse और the signals को receive करेगा और फिर सारे cell body के अंदर pass करेगा, that's actually the dendrite की function है, right. Now you can see that there will be a long thread like structure which is arising from that cytone, right. उसको बोलती है axon. So this part is called axon, right. And this is actually you can see that a long thread like structure है, right. That's actually called as cytone, right. और इसको हम बता सकते हैं इसका last में you can see that there will be some branchings, right. Fine branches are arising from the cytone, उसको sorry axon, right. So इसको हम बोलती है axon endings और nerve endings बताती है, right. So these axon endings of one neuron दूसरी न्यूरॉन से actually connected है, cytone of that what to say dendrite से connected है and there will be a junction which is called as synapse, right. Once again we will go through that structure of that neuron. हम बता सकते हैं there is a cytone which is the cell body, you can see here this is the cell body and there is a prominent nucleus, उसके अंदर कुछ granule जैसा structures होती है cytoplasm में, that's called the Nissl's granules and some fibrils also present which is called the neurofibrils, right. और इधर से जो thread like finger like projection आ जाती है जो which is arising from the cytone उसको हम बताती है dendrite. Dendrite की मेन फंक्शन क्या है, वो impulse और signal रिसीव करती है और cytone के अंदर पास करती है and the signals will be passed to a long branch thread like structure which is arising from the cytone, उसको बोलती है axon.
and this axon is actually branched into small finer branches which is called nerve endings or axon endings हम बता सकती है. कुछ neurons में these axons are actually covered by a special type of sheath which is called myelin sheath, right? So इसको हम बताती है myelin sheath, right? And इसके बीच में ये myelin sheath actually continuous नहीं है. इसके बीच में you can see that actually these sheath will be joined and there will be discontinuous structure will be there in between. उसको हम बताती है knots of Ranvier, knots of Ranvier, right? So this is actually making that impulse transmission very easy. Normally आपको पता है ये impulse इधर से ये long route से जाना है, but ये myelin sheath की वजह से ये impulse एक जगह से दूसरी जगह jump करेगा and from there again it will be jumped to the node of Ranvier so that this impulse transmission will be uska rate of that impulse transmission which will be double. We can say that the jaldi easily the impulse can easily transfer. Direct pathway से वो जल्दी jump कर जाएगा, right? And you can see that these cells of this myelin sheath, this is actually called the Schwann cells, right? So ये cell को एक cell को you can see that the nucleus, you can see that, and these cells are actually called Schwann cells, right? हमने बता दिया था these neurons are actually excitable है, right? So they will carry the impulse, so then it will become excited, right? Then it will transfer to the next, then it will be relaxed. That's actually हम impulse transmission हमको अलग से learn करना है. And you can see that ये neurons are actually protected and supported by some other cells which is called the neuroglia cells. इसके साथ साथ you can see that this is actually the nervous system. You can take that. You can see that this is a that now what to say. If you are taking the section, ये आप देख सकते हैं. This is the cytone part or the cell body जिसमें dendrite arrays होती है और long branch axon होती है, right? Or you can see that here this dendrite part and ये neural tissue में और कुछ अलग से cells you can see that, right? So these are actually the protective cells which is actually surrounded by the nervous neuron and उसको बोलती है neuroglia cells or neuroglia, right? And ये neuroglia की वजह से it's actually you can see that पूरा nervous tissue हम बताती है. So these neuroglia is actually making up that more than half the volume of the neural tissue. बाकी है nervous tissue में neuron है, बाकी area that means half area neurons है, half area neuroglia से बना हुआ है, right? So I hope you have an idea about this. Now one more thing I already told you, ये nerve ending से दूसरी neuron की dendrite शुरू होती है इधर से, right? So there will be a junction in between them. It is not continuously connected. वो junctions हो, वो loosely packed connections को हम बोलती है synapse, synaptic junction और synapse बोलती है, right? So this is the junction between one neuron's nerve ending and the other neuron's dendrite. I hope you have a clear idea about neural tissue or the neuron. Thanks for watching.